Good morning students. Last class we have finished practice set 5.2. Today I am going to teach you real numbers surds. Here surds means what? If a positive rational number and the nth root of a is x, then if x is an irrational number, then x is called a surd. Surd is an irrational root. Always remember that surd is an irrational root. So if it is irrational root, that means it is a surd. Here what is written? If a is a positive rational number and nth root of x, that means power is nth, okay? Power is x, okay? And here if x is an irrational number, that means the root is an irrational number, then that x is called as a surd, okay? So always remember that surds is an irrational number. Surds is an irrational root, okay? So what is surds? Surds is an irrational root. So if a positive rational number and the nth root of a is x, so if x is an irrational number, then x is called a surd. So here surd is an irrational root. So here now we will take some example on the base of this. Now here if in a surd, you can see this square root of a. So the symbol is root, okay? So root is called as surd sign, okay? This root is called as a surd sign. So it is shown here. So this root is called as a surd sign. So in a surd, this square root of a, so the symbol, this root symbol is called as a surd sign. This root symbol is called as a surd sign. So here nth is the order. Now here you can see the nth is the order of the surd, okay? Outside this root there is a nth is given, and a is called as a radicand. A is called as a radicand. And see that this is nth, okay? Outside the root there is a number written, that is nth, okay? So nth is the order of a surd and a is called radicand. For example, cube root of 31. Here the number is given that cube root of 31. So here cube is the order. Cube is the order. And here sign for surd is root, and 31 is the radicand. Is that clear? That means this 31 is a radicand. Inside the root there is a radicand, and outside the root there is a order. So here order is 3 and 31 is a radicand. So in this example, order of the surd is 3 and radicand is 31. This year we are going to study surds of order 2 only. Okay, this year we are going to study surds of order 2 only. Now here we can see the square root, the cube root, okay? So the root is order, and the number inside the root given number is known as a radicand. Okay, so as I told you that this year we are going to study surds of order 2 only. Now here this is known as a root 3, root 7, root 42. So here order is 2, okay? There is no number given, na? That means there is a square root of 3, square root of 7, square root of 42, and so on, etc. Okay, so here as you can see here root 3, that means here order is 2, root 7, that means here order is 2, root 42, okay, root 42, that means here also order is 2. That is why we are saying that square root of 3, square root of 7 and square root of 42, etc. That means many number, okay? You can say root 45, root 48, root 99. That means there is a square outside the root, okay? So square means which number? Square means 2. So this year we are going to study surds of order 2 only. Is that clear, my dear students? Okay, let's proceed. So here now the order of a surd 2 are called
quadratic surd. Okay, always remember that if the power is 2, okay, the order of the surd is 2, that means it is a quadratic surd. Which type of a surd it is? It is a quadratic surd. Always remember, my dear students, surd is an irrational root. Surd is an irrational root. Always remember this. Okay, so here the surds of a order given root, that is root 3, root 7, root 42, order is 2. Now similar or like surd. Similar or like surd means if P and Q are rational number where P root A and Q root A are called like surd. Okay, see here what are the similarity? P root A and Q root A inside the radicand are common. Okay, inside the number, inside the root are called as radicand. See here, root A common. P and Q are different, but the radicand, that is A are common for both the root. Okay, so P root A inside the root we called as radicand. Okay, so radicand are common. So if they are common, that means they are like, they are similar. So if P and Q are rational numbers, then P root A and P root Q are called P root A and Q root A. P root A and Q root A are called like surd, where root A and root A are similar, or we can say they both are like surd. Exactly, they are common with each other. Okay, my dear students. Okay, now let's proceed. So here now, two surds are said to be like surd if their order is equal or radicands are equal. What I am saying, that two surds are said to be like surd if their order is equal or radicand are equal. See here, देखो यहाँ पर P रूट A और Q रूट A, यहाँ पर जो रेडिकेंट था रूट A है, वो दोनों ही जगह P और Q का जो रेडिकेंट है इनसाइड द नंबर इक्वल है. दैट इज वाई वहाँ पर क्या है, वो सिमिलर है. सो टू सर्ड्स आर सेड टू बी लाइक सर्ड इफ देयर ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो अगर इक्वल रहा तभी भी वो क्या रहेगा, लाइक सर्ड. Operation on like surd. Now here mathematical operation like addition. As you know that how many operation, addition, subtraction, multiplication and division can be done on like surd. Okay, so here this mathematical operation, we can say that addition, subtraction, multiplication and division, these all are mathematical operation can be done on like surd. So now let's proceed. Practice set 2.3. So let's solve practice set 2.3 first question. So here this practice set 2.3 based on what I have taught you now. So let's solve practice set 2.3. But before that, open your textbook and be ready. Now here we will see the first question. State the order of the surd given below. Now here we have to state the order of the surd given below. Here cube root of 7, you can see here cube. Okay, cube root of 7. First question is cube root of 7. So my dear students, here you have to state the order of the surd. What is the order of the surd? You are correct, cube is the order of the surd. So here we will write order is 3. Okay, fifth root of 12. Okay, so here order is not given. See, 5 is outside the root, it is not above. Okay, अगर नंबर ऊपर की तरफ रहेगा तो वो ऑर्डर है, नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर 2 आएगा. क्यों? क्योंकि 5 जो है वो नीचे है, देखो ऊपर नहीं दिख रहा, ऊपर कोई नंबर है नहीं है, तो ऐसी प्लेस पे हम कंसीडर करेंगे ऑर्डर को 2. Okay, so here order is 2. Always remember 2 is a quadratic surd. Now here fourth root of 10, so order is 4. Order is 4. Fourth root of 10, so order is 4. Now here root 39, order is 2. Here cube root of 7, cube is order, so here order is cube. Okay, order is 5, so order is 5. Fifth root of 7, order is 5. Fifth root of 7, order is 5. Now here 8th root of 81. Okay, 8th root of 4th root of 81. You can open your textbook and see here. Okay, question number 6. Here 8 and outside inside 4. So 8 4s are 36. Okay, so now here we have to do multiplication operation. So see this, outside the root there is a number and inside the root there is a number. Okay, and the radicand is 18. Okay, so now
multiply both this number, okay, and then we will get here order of the surds. So here 3 4s are 12, okay, so 3 4s is 12. So my dear students, is that clear? So in this way we have finished till question number 6. So here 3 4s are 12. Now question number 2, state which of the following are surds, justify. Now my dear students, here you have to justify the question, okay. State which of the following are surds. So we have to justify. Here cube root of 51 is given, so we have to justify whether it is a surd or not surd. So when it is surd, when the root is irrational root, okay. So here surd is when the root is irrational. So here cube root of 51. So here we have to check whether it is surd or not. This is an irrational number, okay. Why? Because it is a surd. Cube root of 51. This is an irrational number and it is a surd, okay. Root always be a surd. So here cube root of here 16. Cube root of 51, this is an irrational number, it is a surd. Now here sub question 2, fourth root of 16. Fourth root of 16, see here 16, 4 4s are 16 is there. So it is not an irrational number, okay. It is not an irrational number, because as you know that the factor of 16 is 4 4s are 16 and 16 is an even number. So 4 4s are 16. So 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16. So here 2 power 4 and outside the root there is a 4 given, okay. So fourth root of 16 is 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So here we get root is 2, okay. We get here root is 2. So it is a rational number, so it is not a surd. When it is rational number, that means it is not a surd. When it is irrational, that means it is a surd. अगर surd होने के लिए irrational number है तो ही वो surd है, अगर वो rational number है तो वो surds नहीं है. जैसे कि 4 root 16 rational number था तो वो surds नहीं है, तो क्या हो गया वो, it is not a surd. Is that clear? Always remember. देखो सब पूरा solve करने के बाद इसका आंसर हमको 2 मिल रहा है जो कि root नहीं है. अगर root नहीं है तो वो सर्ड नहीं है. सर्ड शुड ऑलवेज बी अ रूट. अभी को सब क्वेश्चन थर्ड देखो, 8th रूट ऑफ 81. नाउ हियर यू कैन सी दिस 81 का रूट दिया हुआ है. अब हमको इसका है ना जस्टिफाई करना है अगेन, ठीक है. सो अब हम इसको देखेंगे कि ये कौन सा टेबल में ये है, फैक्टराइज होता है कि नहीं होता है. फैक्टर्स यानी कि वो ऑड नंबर है कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स है. अभी 81 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, क्या है वो हमको कंसीडर करना है, ठीक है. जैसे हमने 51 और 16 को देखा तो 15 कैसा नंबर था, ऑड नंबर था जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है, और 16 कैसा था, इवन नंबर था. बट 81 का क्या सीन है, 81 ऑड नंबर है बट उसके बहुत सारे फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल वो 1 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और ठीक है 9 9 से 81 है, खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है. 3 के टेबल में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो दैट मीन्स 4 टेबल्स में वो ईजिली डिवाइड हो सकता है. सो दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ अ सर्ड, ओके. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ अ सर्ड. वो कैसा नंबर है, इरेशनल है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो ऑड नंबर भी है और साथ में उसका जो रूट है वो इरेशनल है. नाउ रूट 256, सी माय डियर स्टूडेंट्स, रूट 256 जो है उसका स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट क्या है, 16 है. 16 16 से 256. ऑलवेज रिमेंबर 16 16 से कितना आता है, 256. और इसका जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो कितना है, 2 है. सो हियर यू कैन सी द रेडिकेंट. अभी रेडिकेंट तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या मिला, 16. सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ सर्ड, ठीक है. अगर इरेशनल है तो सर्ड्स है और इरेशनल नहीं, रैशनल है तो वो सर्ड्स नहीं है. अभी यू कैन सी हियर क्यूब रूट ऑफ 64. क्यूब रूट ऑफ 64 इज गिवन, ओके. सो 64 कौन सा है, 8 8 से 64 आता है, 4 4 से 16, 16 4 से 64, ओके. सो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब. अभी ये क्यूब कट गया और बाहर का क्यूब कट गया, दोनों को क्यूब का कट करते तो हमारे पास जो नंबर बचता है 4 है. तो अभी वो क्या हो गया, रैशनल नंबर बन गया. तो क्यूब रूट ऑफ 64 जो है वो रैशनल नंबर है. क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो ये सर्ड्स नहीं हो सकता. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके. सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज अ रैशनल नंबर, हेंस इट इज़ नॉट अ सर्ड्स.
ओके, इज दैट क्लियर? जब उसका रैशनल नंबर है तो वह सर्ट्स नहीं है, अगर वो इरेशनल रहता तो ही वो सर्ट रहता। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? अब दिख भी रहा है आपको 64 जो है वो इवन नंबर है, 256 है वो इवन नंबर है, 81 ऑड नंबर था। तो जितने भी ऑड नंबर है ना ये सब के सब सर्ट्स है, और जितने भी इवन नंबर है ना वो सब के सब, जितने भी इवन नंबर है वो सब नॉट सर्ट है। ठीक है, अभी √22/7, देखो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते 22/7 को। ठीक है, बिकॉज 22 क्या है, इवन नंबर है, और 7 क्या है, ऑड नंबर है। बाहर है स्क्वायर, लेकिन इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसका तो कोई पर्टिकुलर स्क्वायर भी नहीं है। सो ये इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, सर्ट्स हो गया। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर एंड हेंस इट इज अ सर्ट्स। इज दैट क्लियर? Now let's solve practice set 2.3 question number 3, that is simplify the following surds. So first is √27। अब my dear students हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है सर्ट्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज √27। तो चलिए सर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करना है इसको। सो √27 को हमको दिखाना है कि कौन कौन से टेबल में फैक्टर्स है इसका। सिंपल है, 3 9 27 है, आप सबको पता है। 27 जो है वो ऑड नंबर है। अब वो कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कब आता है, 3 9 27 आता है। ठीक है, सो हम इसको लेंगे √3 × 9 which give us √27. Is that clear? So now we are going to take here a root where 27 is divided by 3. So 3 into 9. Okay, 3 into 9 how much, 27. If we divide this 27 by 3 ना, तो हमको वो 9 मिलेगा। तो हमको पता है जब 9 से तो 9 into 3 करेंगे तो भी 27 है, 3 into 9 करेंगे तभी भी कितना है, वो 27 है। सो √27 gives us √9 × 3। क्या आपको पता है 9 का भी रूट है, क्या है, 3 3 is 9। सो हियर आई हैव रिटन 3 स्क्वायर। वाई, बिकॉज 9 का जो रूट है वो है 3, और 3 का अगर मैं स्क्वायर देती हूँ 3 3 से कितना आता है, 9 आता है। तो 3 स्क्वायर × 3, द गिवन 3 इज एज इट इज़। ये जो लास्ट का 3 है ना आप देख रहे हो वो एज इट इज़ है। सो नाउ हियर 3 स्क्वायर जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, 3√3 लिखेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये जो 3 है उसको मैंने नीचे की तरफ लिखा है, और रेडिकेंड यानी इनसाइड जो 3 दिख रहा है आपको ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर जो है ऑर्डर वो क्या है, स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट्स। जो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको लिखना ही नहीं है स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर कितना आता है, 3 3 is 9, और इनसाइड द रूट कितना है 3। जो ये 3 है वो क्या है, रेडिकेंड है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 सेज दैट √50। अब √50 का हमको बताना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमें √50 को। सो √50 को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कौन से टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। येस, यू आर करेक्ट दैट 5 10 50 आता है, और 25 2 भी 50 आता है। तो हम सबसे लोवेस्ट नंबर को लेंगे, लोवेस्ट मल्टीपल क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम 2 से कंसीडर करेंगे। सो हम यहाँ पर √50 के लिए लेंगे 25 × 2। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे। 2 के टेबल में 50 डिवाइड होता है तो कब आता है, 2 से 25। तो हम बड़े नंबर को जैसे 9 को पहले रखे थे वैसे 25 को पहले रखेंगे। सो 25 × 2 गिव्स अस √50। सो हियर √50 इज इक्वल टू √25 × 2। अभी 25 का स्क्वायर क्या है, 5 है। सो 5 स्क्वायर, 5 5 is 25। सो हियर 5 स्क्वायर, सी माय डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर। 5 स्क्वायर कैसा आया, 5 5 is 25, और जो लास्ट का 2 है वो एज इट इज़ रहा। अब देखो अगेन मैंने यहाँ पर कोई रूट डाला ही नहीं है। सो 5 जो है वो नीचे की तरफ है, रेडिकेंड क्या है, इनसाइड 2, वो एज इट इज़ लिया है, और ऊपर जो है उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। सो यहाँ पर आंसर कितना है, 5√2। Let's solve sub question 3. 250 √250। सी माय डियर स्टूडेंट्स अगेन सेम क्वेश्चन, बट वहाँ पर क्या है, 10 ऐड किया गया। तो 25 जो है वो कौन से टेबल में आता है, 5 5 is 25 आता है। सो 50 इंटू करेंगे। अब यहाँ पर 25 × 10 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 25 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 250। सो √25 × 10। अभी 25 कौन से टेबल में आता है आप मुझे बताओ, 5 5 is 25। 25 का रूट क्या है, 5 है, तो 5 स्क्वायर, √5 स्क्वायर × 10। अभी इनसाइड द रेडिकेंट, ये जो है 10 है ना वो रेडिकेंट है, उसको इनसाइड द रूट रखना है हमको, रूट के अंदर। सो 5 √10। सी ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोग ऑर्डर नहीं लिख रहे इतने देर से, क्यों, क्योंकि वो एज इट इज़ है। नाउ √112 माय डियर स्टूडेंट सी हियर सब क्वेश्चन 4। √112 इसका फैक्टर हमको देखना है। देखो लास्ट का नंबर 2 है ना, तो किससे डिवाइड करना है, 16 7 से लेते हैं, 16 × 7 करेंगे हम
ठीक है, 7 × 16 करेंगे तो भी हमको 112 आएगा. सो रूट 16 × 7, अभी 16 का स्क्वायर क्या है, 4 4 से 16 है. सो रूट 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम क्या लिखेंगे 4√7. हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये जो स्क्वायर है ना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो रेडिकेंड में जो इनसाइड रहेगा ना रूट, वहाँ पर हम 7 लिखेंगे और 4 आउटसाइड द रूट लिखेंगे. ठीक है, सो अगेन 4√7 एज इट इज़. माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are understanding what I am teaching here. Okay, so make sure that when you are understanding, write this in your maths notebook. Okay, so that it will help you to understand more clearly. So now let's do some other sums. So here now after solving this, simplify the following set. You are here, what you are seeing that number का factors क्या है. So 9 3 27 था, 25 × 2 लिया हमने, 25 × 10 किया, एंड लास्टली 16 × 7. इन सब से हमको यहाँ पर ऑर्डर्स हमको पता चल रहे, ऑर्डर्स का भी हमने यूज़ किया है. देखो हम यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं लिख रहे, जो ऑर्डर्स है ना वो रूट है, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 4. क्लासीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन 4. Here we have to classify the following सर्ट्स like and unlike सर्ट्स. Okay, so here let's solve the first one. So like सर्ट means what, जिसका अंदर का जो रूट है रेडिकेंट है, अगर इक्वल है तो वो लाइक है, अगर नॉट इक्वल है तो वो अनलाइक है. जैसे मैंने आपको बताया था P/Q क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, सो अगर P है रूट ए. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 52, फर्स्ट है सब क्वेश्चन 1, 52 5√13. ओके, अब हमको देखना है कि 52 का जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, अभी यहाँ पर भी हमको सिंप्लीफाई यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में किया है. अभी रूट 52 जो है उसको हमको सिंप्लीफाई करके देखना है. अगर 13 मिलता है हमको रेडिकेंट इनसाइड द नंबर, इनसाइड द रूट, तो वो राइट है. तो 4 × फिर 13 कितना आता है, 52 आता है. 4 × 13 कितना आता है, 52. अगर 52 को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे को 4 × 13 मिलेगा. सो 4 × 13 इज हाउ मच, 52. ना 4 का रूट क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर, 2 2 से कितना आता है, 4 आता है. सी ईयर 4 का रूट क्या है, 2 है ना. सो 2 स्क्वायर इंटू 13 एज इट इज़ आपको लिखना है. अभी देखो 2 स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगी, 2√13 लिखूंगी. ऑर्डर लिखने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना ऊपर का ऑर्डर नहीं लिखेंगे. अब यहाँ पर 5√13 कंपेयर करो, देखो इनसाइड जो रेडिकेंट था दोनों का इक्वल है ना. यहाँ पर आप देख सकते हो 2√13 और 5√13, यहाँ पर रेडिकेंट दोनों के इक्वल है. तो ऐसे जब आपको इक्वल रेडिकेंट मिलते हैं, अंदर का रूट देखो 13 जो है वो रेडिकेंट है, दोनों का रूट जो है अंदर का वो सेम है, तो वो क्या बन गया, लाइक सर्ट बन गया. सो हियर 2√13 इज इक्वल टू 5√13. ओके, 2 और 5 जो है वो P और Q का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर A का काम जो कर रहा है वो 13 और 13 है. ठीक है, यहाँ पर 13 एक दूसरे से इक्वल है. सो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से इक्वल हो गए. दैट मीन्स इट इज़ अ लाइक सर्ट. इज दैट क्लियर, इट इज़ अ लाइक सर्ट. सो हियर in this question, root 52 comma 5√13, order and radicand of those surds are equal, above surds are called as like surd. So the given surds are like surd. तो आपको इतना सिंपल लिखना है. ऑर्डर एंड रेडिकेंट जो है देखो ना, 2√13 इसका ऑर्डर क्या है, 2 है. 5√13 इसका ऑर्डर क्या है, 2 है. दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है. लेकिन ये जो नीचे का नंबर है उसके डिफरेंट होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का रेडिकेंट इक्वल है. नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड सब क्वेश्चन. 5√5 एंड 2√75. सो 5√5 तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें नो परिवर्तन, नो चेंजेस. हम चेंजेस किस में करने वाले, 2√75 में, क्योंकि 5 से तो कोई नहीं देखना जा सकता. 2√75, 75 कौन से टेबल में आता है, 25 के टेबल में. कब आता है, 25 × 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 75 मिलेगा. तो 25 का रूट क्या है, 5 है. 25 का रूट क्या है, 5 है ना. सो 25 5 स्क्वायर, 2√5 square multiply by 3. Okay, so now 2√25 2√5 square, 25 का रूट क्या है, 5 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 3.
इज दैट क्लियर? सो नाउ अब हम क्या करेंगे ना, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हियर केयरफुली. 2√5 स्क्वायर, व्हाट आई एम सेइंग हियर, 2√5 स्क्वायर, बिकॉज 5 5 25 था. सो 5 स्क्वायर का देखो क्या हो गया, 5 जो था वो बाहर चला गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया. पहले 5 स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया, तो 2 5 से कितना हो गया, 10 हो गया. नाउ 5 अंदर क्या है, 3. अब देखो ये 3 और 5√5 जो है वो एक दूसरे से अनइक्वल है. ओके, 5√5 और 2√75 क्या हो जाएगा, अनलाइक सेट, क्योंकि यहाँ पर रेडिकेंट दोनों का अनइक्वल है. देखो ना यहाँ पर अंदर का जो है ना रूट, वहाँ पर क्या है, रूट सेम है लेकिन ऑर्डर सेम है, लेकिन जो रेडिकेंट है इसका 5 है और उसका 3 है. 5√5 और उसका कितना है, 10√3, तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो क्या हो गया, ये अनलाइक सेट हो गया. ठीक है, तो ऑर्डर तो भले ही दोनों का सेम है बट वो लोग के रेडिकेंट अलग है. ऑर्डर्स ऑफ अ सेट्स आर इक्वल बट रेडिकेंट आर डिफरेंट, सो अबो सेट्स आर अनलाइक सेट. ऑर्डर देखो ना दोनों की जगह राइट है, वहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, इधर भी स्क्वायर है. ठीक है, 5 के ऊपर 2 है और 10 के ऊपर भी 2 है, लेकिन बट 5 जो है रूट के पास अंदर √5 है, उधर √3 है, तो अनलाइक हो गया. Let's solve sub question 3. 19√12 and 6√3. 19√12 and 6√3. My dear students, see here carefully. 19√12. So 19√12 is equal to 19 as it is. और 12 कौन से टेबल में आता है, 4 3 12. यू आर करेक्ट. 4 3 कितना आएगा, 12. देखो हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो 4 3 कितना लिया हमने, 12 लिए. ठीक है, नाउ 4 का रूट क्या है, 2 है, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज. सो 19√2 square, 2 2 4 multiply by 3 as it is. Now here carefully observe. Now here 2 2 कितना आता है, 4 आता है. ठीक है, so 19 2 2 4, so 2 आउटसाइड ले लो. ठीक है, 2 2 4 कॉमन 2 और इनसाइड 3 आया, सो 19 इंटू 2 कितना है, 38 3. देखो अंदर का रेडिकेंट एक दूसरे से इक्वल हो गया ना, 6√3 के बराबर है 38√3. यहाँ पर ऑर्डर तो दोनों का भी स्क्वायर है और इनसाइड रेडिकेंट कितना है, 3 है, सो 6√3 इज इक्वल विथ 38√3. ठीक है, दैट मीन्स 19√12 इज इक्वल विथ 6√3. ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडिकेंट आफ्टर सिंप्लीफाई हमको जो रेडिकेंट मिल रहा है 38√3 19√12 से, तो वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है 6√3 से. सो ऑर्डर एंड रेडिकेंट आर ऑफ दोज सेट्स आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई अबो सेट्स आर सेट्स. So the above sets are like set. Now here you can see this, they are like set. Is that clear, my dear students? So here order and radicand of those sets are like set. Compare the following pair of set. Now here we have to compare the following pair of a sets. कंपेयर मतलब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा साइड ग्रेटर है, कौन सा साइड स्मॉलर है. जो साइड ग्रेटर है उसके पास ग्रेटर नंबर का साइन, जो साइड स्मॉलर है उसके पास स्मॉलर नंबर का साइन. ठीक है, सिंपली यह हमने क्लास 8 स्टैंडर्ड में कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2 में सॉल्व किए. सेम टेक्निक वी विल अप्लाई हियर. रूट 247 कंपेयर विथ रूट 274. अच्छा बताओ 247 बड़ा है कि 274 बड़ा है, आप बताओ. ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर तो आपको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है. You are correct. 274 is greater than 247. So that means that root 247 is smaller than root 274. तो अब बताओ किसके पास बड़े मुंह की साइन रहेंगी. yes, किसके पास बड़ा मुंह रहेगा, 274 के पास कि 247 के पास. You are correct, 274 के पास. So 247 is less than 274. So देखो आप लोग बड़े नंबर की साइन किसके पास है, 274 के पास है. ठीक है, सो लास्ट पे हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 247 इज स्मॉलर देन रूट 274. किसके पास बड़े नंबर की साइन है, 274 के पास. दैट मीन्स रूट 274 इज ग्रेटर देन 247. लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2. √7 √2 कॉमा 5√3. कंपेयर करो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 7√2 बड़ा है कि 5√3 बड़ा है. अब मैंने आपको बताई ना 7 के ऊपर जो नंबर है वो स्क्वायर है. ठीक है, तो 7 7
49 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपको 7√2 को है ना इनसाइड द रूट में लेके जाना है, ठीक है। सो 7 को इनसाइड रूट में लेके गए तो क्या हो जाएगा, रेडिकेंड की प्लेस पे जाएगा 7 अब। सो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, सो 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 2 करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा, 98, ठीक है। सो 7√2 से हमको मिलता है 98। लेट्स चेक 5√3 से हमको कितना आंसर मिलता है, ठीक है। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो हियर 7√2 से तो हमको √98 मिला है, तो अब देखते हैं 5√3 से कितना आंसर आता है। सो लेट्स कंपेयर विथ 5√3। सो फर्स्ट वी विल सी 5√3 के लिए क्या है। सो सेम थिंग वी विल राइट हियर 5√3, okay, so here as we have show here 7 square, so 7 7 is 49 multiply by 2, 49 into 2 कितना आता है, √98 आता है, ठीक है। अब देखते हैं हमको 5√3 √98 देता है या उससे कुछ अलग डिफरेंट नंबर देता है, ठीक है। सो हियर लेट्स कंपेयर विथ 5√3। सो 5√3 इज इक्वल टू, एज आई टोल्ड कि 5 के ऊपर जो नंबर है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो इनसाइड रेडिकेट यानी कि इनसाइड रूट लेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। सो 5 स्क्वायर इंटू 3, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अब बताओ आपके सामने आंसर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, √98 ग्रेटर है कि √75 ग्रेटर है। यू आर करेक्ट, √98 इज ग्रेटर देन √75। इज दैट क्लियर, √98 इज ग्रेटर देन √75। सो हियर ऑन दिस सम्स √98 is greater than 75. That means left hand side is greater than right hand side. That means 7√2 is greater than 5√3. Okay, so here we will write 7√2 is greater than 5√3. Left hand side greater है किसके कंपेयर में, right hand side के। Let's solve sub question 3. 2√7, √28. 2√7, √28. Dear students, see here. आउटसाइड द नंबर गिवन 2, ठीक है। ऑर्डर तो उसका स्क्वायर है, ये तो हमको पता है, ठीक है। सो √2 स्क्वायर इंटू 7, सो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, एंड नाउ दिस 28 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल विथ राइट हैंड साइड 28, ओके, दे बोथ आर इक्वल। √28 का कंपैरिजन अगर √28 के साथ होगा तो दे आर इक्वल। सो हियर यू कैन राइट 28 इज इक्वल टू 28, here 28 is equal to 28, okay, both the numbers are equal, so 28 is equal to 28. That means 2√7 is equal to √28, दोनों भी एक नंबर एक दूसरे से exactly equal है। so 2√7 is equal to √28, therefore 2√7 is equal to √28. now here 5√3, 9। अब देखते हैं 5√3 को सिंप्लीफाई करके कि हमको कितना आंसर आता है, और 9 को हम बाद में देखते हैं। सो 5√3 इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। सो इनसाइड द रूट वी विल पुट, फर्स्ट वी विल राइट 5√3 इज इक्वल टू √5 स्क्वायर, ओके, ऑर्डर इज 2 ना। सो 5 स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 175, 25 3 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, ओके। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट, now 9 9 is 81, so order 9 is equal to √9 square, 9 is equal to √9 square, so 9 9 is 81, so here root of 81. now tell me which number is greater, you are correct, 81, √81 is greater than √75. that means right hand side 9 is greater than 5√3, okay. So 81 is greater, so 75 is smaller than 81, 81 is greater than 75, so 5√3 is smaller than √9, so here 9 is greater than 5√3. is that clear, my dear students? So in this way we have finished these 4 sub questions, okay. so now here you have to compare the following order and solve. So my dear students, pause the video and solve all the sums in your maths 1 notebook. So I hope you all are understanding all these sums which I have taught you today, okay. So your task is to solve each and every sums which I have taught you today. now let's solve other question. So here next question is simplify. so now here on this we will see some more new questions. So after solving comparison, now let's proceed with the different question. now my dear students, here you have to make sure that you have to apply the same technique in question number 6, okay. so here I am going to teach you question number 6. so are you all ready to solve this question number 6?
Okay, so in your textbook, question number 6, just go through the question, okay, and check. So here question number 6 is simplify. So here let's solve simplify. So first simplification we will solve here. So now sub question 1, question number 6, simplify sub question 1. As you see here, 5 root 3 plus 8 root 3. See here, inside the radicand root 3 is equal, but the operation we are using here, addition operation. Inside, see here which operation we are using, addition operation we are using here. So 5 root 3 plus 8 root 3. So addition operation we are using here. Okay, so radicand is equal. Okay, so what we will do here, we will use here operation, that is addition. Which sign it is? Addition sign. So see here, both the side, 5 root 3 plus 8 root 3. So here you can see the radicand are common. So 5 root 3 plus 8 root 3. So common radicand we will put outside. Okay, now 5 plus 8. 5 plus 8 is how much? 13. 5 plus 8 is how much? 13. So 13 root 3. Okay, root 3 is the common, that is why we put outside. Root 3 is the common, that is why we put it outside. Is that clear? Now let's solve. We will apply the same technique to solve other sums. Okay, now here, but before understand here, as you can see here, root 3, देखो ना, root 3 जो है वो क्या है, इक्वल है, तो उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे. ठीक है, लेकिन 5 प्लस 8 जो है वो दोनों ही डिफरेंट नंबर है, तो हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एडिशन ऑपरेशन. ठीक है, तो हम आउटसाइड द रूट 3 हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 8 करेंगे. सो कितना आएगा, 5 प्लस 8 कितना आएगा, 13 आएगा. रूट 3 कॉमन था, दैट्स वाई हम उसको वन टाइम लिखेंगे. सो कितना है, 13 रूट 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस root 125. Now here the operation we are using is minus and plus. Okay, so here root 125 is 25. 25 is 125. So root for 125 is 25. Now 9 root 5 minus 4 root 5 plus root 125. So keep 9 root 5 as it is minus 4 root 5 as it is plus root 25. Now do again one simplification. 9 root 5 minus 4 root 5 as it is. Now root of 125 is 25 5 is 125. 25 5 is 125. Is that clear? Now 9 root 5 as it is minus 4 root 5 as it is plus sign. 5 5 is 25, 5 square. Okay, so 5 root 5, the order is square. Now here, see here, everywhere root 5 is the common radian. So keep common radian outside the bracket and inside the bracket. Okay, so here 9 minus 4 plus 5. 9 minus 4 plus 5. Okay, so 9 minus 4 is how much? 5. 5 plus 5 is 10. So here 10 root 5 is our answer. Is that clear? So same like previous one, here we have applied the same technique, but here we are using two operation. So here the operation is minus and plus. So our answer is 10 root 5. Now question, sub question 3. 7 root 48 minus 27 root minus 3. So here we are going to see the factorize first. So root of 48, which table it will divide? Root of 27, which table it will divide? And root of 3. So okay, so here 7 root 16 into 3 gives us 48 minus 9 into 3 gives us 27 minus 3. Okay, now here we are finding 16 root and 9 root. So here 16 root is 4 and 9 root is 3. So 7 4 is 16, 4 4 is 16. So keep the 4 outside, inside radian 3. Minus 3 3 is 9. Keep the 3 outside and radian is 3 and minus root 3. See, everywhere root 3 is the common radian. Okay, so keep the common radian outside the root. Okay, and inside the bracket put 28 minus 3 minus 1. So 28 minus 3 is 25. Okay, and 25 minus 1 is 24.
Okay, but here the minus minus sign, as you know that minus minus operation is plus. So what we will do here, keep keep root 2 as root 3 as it is. Okay, so here 28 minus 3 is 25, and 25 minus 1 is 24. So 24 root 3. Is that clear? So our answer is 24 root 3. Now here sub question 4, root 7 minus 3 upon 5 root 7 plus 2 root 7. Now here we are going to find the common radian. We are checking first, we have to keep the common radian. So as you know that here there is no number given, so 1 minus 3 upon 5 as it is plus 2, and common radian is 7. So give the common radian outside the bracket. Now here 3 ones are 3. We will do simply mixed fraction method. 3 ones are 3, denominator 5 common, root 7. Okay, so 5 3s are 15, 15 minus 3. Use mixed fraction rule. 5 3s are 15. Denominator will multiply by whole number will multiply by numerator. Okay, minus numerator. So 15 minus 3 give us 12. 12 upon 5 root 7. So our answer is 15 upon 2 root 7. Multiply and write the answer in the simplest form. Now here question number 7 is multiply and write the answer in the simplest form. Okay, so we will apply the same simplification technique, but here we are going to take operation multiplication. So as I told you before, whenever you see the bracket, we will do the multiplication. Now here 3 will multiply by 7. Okay, 3 will multiply by 7, and here the radians are different. See here, for root 3 root 12 is given, and for 7 root 15 is given. So as you see here, रेडियंस आर डिफरेंट. जो अंदर का रूट है वो दोनों के लिए डिफरेंट है. एक जगह आप देख सकते हो 12 है, तो दूसरे तरफ आप देख सकते हो 15 है. सो हम क्या करेंगे, टेक द ब्रैकेट एंड हियर outside the bracket write here 3 into 7, and inside the radian write there 12 into 15. Okay, so 12 will multiply by 15 and 3 will multiply by 7. Simply we have to do a multiplication. So 3 7 से कितना आता है 21, and root of 12 multiply by 15 give us 180. So here our answer is 21 root 180. It is the simplest multiplication form. Okay, so we are doing just simply multiplication. So 3 7s are 21, and 12 into 15 gives us 180. So the final answer is 21 root to 180. So here we are going to check the simplification method. We are applying a simplification method while we are calculating here factorize. So 180 is coming 36 into 5. So 21 रूट 36 इंटू 5. 36 का स्क्वायर क्या है 6 है. 6 6 36 होता है. सो हियर 21 इंटू 6 root 5 as it is. So here 21 into 6 how much, 126 root 5. Now next question is 3 root 8 into root 5. 3 root 8 into root 5. Now as you can see here, radiant is 5 and radiant is 8. So 3 1s are 3, because here for 8 is given, but for 5 no numbers is given. That means there is a 1. And as you know that order is square. So 3 1s are 3 and 8 5s are 40. 3 1s are 3 and 8 5s are 40. Radian, after multiplying the radian we get here 40. So now we are going to check the factor of 14. So 3 root 40. So 4 10s से कितना आता है 40 आता है. ठीक है, हमको 40 का ये निकालना है, फैक्टर्स निकालना है. तो 4 10s are 40. अब 4 का स्क्वायर क्या है 2 है. 2 2s are 4. तो 2 हम डायरेक्टली आउट कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर 2 स्क्वायर कितना आएगा 2 2s are 4. सो रूट 10. सो 6 रूट 10. 2 3s are 6 रूट 10. नाउ सब क्वेश्चन 3. 5 root 8 multiply by 2 root 8. So here 5 root 8. 5 will multiply by 8 and root 8 into root 8. See here we are doing multiplication. So कॉमन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. सिंप्लीफाई रहता है तो कॉमन लेते. सो 5 into 2 and root 8 into 8. Root 8 into 8 give us 64. And 5 2s are 10. So 10 root 64. Now here again we are calculating the factor. So 64 का रूट क्या है 8 है. So 10 into 8. सी डायरेक्टली हमने ले लिए. 8 8 से 64 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो कॉमन हमको 80 है, तो फिर क्या लेंगे 10 into 8. 10 से कितना आता है 80. इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज 64 का जो रूट है वो 8 है.
ठीक है। तो यहाँ पर उससे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि 8 का कोई हम स्क्वायर नहीं ले रहे, हम स्क्वायर रूट्स चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सब सारे हमने स्क्वायर्स चेक करे। सो डिवाइड and write answer in simplest form. Here we are going to divide an answer in simplest form. So first question is root 98 divided by root 2. Okay, so root 98 divided by root 2. Here we are going to divide. तो आपको क्या करने का है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पोजीशन में इसको रखना है. So numerator is 98 and denominator is 2. After dividing 2 1s are 2, 2 49s are 98. ठीक है, अगर 2 के टेबल में हम 98 को डिवाइड करते हैं तो हमको 49 आंसर आएगा. तो इसका आंसर हमको लिखना है रूट 49. अब आप सबको पता है 49 का रूट क्या है, 7 है. हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट चेक कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हमको 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ स्क्वायर रूट से डील करना है. क्वेश्चन 2, रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय रूट 50. तो अभी सबसे पहले रूट ऑफ 125 का हमको फैक्टर निकाला है. तो रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय 50. तो न्यूमरेटर इज़ 125, डिनोमिनेटर इज़ 50. सो 50 के टेबल में 125 पॉसिबल है, येस और नो? नो. तो हम कौन से टेबल में देखेंगे? सिंपली हम लोग चेक करेंगे इसको 25 के टेबल में. सो 25 2s are 50 एंड 25 5s are 125. सो 5/2 मिलेगा आपको. सी हियर 25 2s are 50 and 25 5s are 125. So 5 is numerator and 2 is denominator. तो अब इसके आगे तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता बिकॉज 5/2 है. ठीक है, तो 5/2 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है. तो इसको हम एज इट इज़ ही यहाँ पर फिनिश कर देंगे. नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3. रूट ऑफ 310 डिवाइड बाय रूट 5. So here root of 310 numerator, 5 denominator. So after divide by 5 we get here 62. 5 1s are 5, 5 62s are 310. So after dividing by 5 we get here 62. Okay, 310 को डिवाइड किया 5 से तो हमको कितना मिला? रूट 62 मिला. अब आप मुझे बताओ क्या रूट 62 का कोई स्क्वायर है? यस नहीं है. बट रूट 62 कौन से टेबल में आता है वो हमको चेक करना होगा. सो हम चेक करते हैं यहाँ पर, बिकॉज 62 जो है वो इवन नंबर है. ठीक है, सो वहाँ पर ही फिनिश कर दिया उसको. rationalize the denominator. Now we are going to see here rationalize the denominator. Question number 9. This is the last question and here we are going to see the first sub question. Here we are going to apply here rationalizing the denominator. यहाँ पर हमको denominator से deal करना है. So now here make sure that when we are using this rationalizing the denominator, what we have to do here. So we have to apply the same technique, multiplication method, addition, subtraction, operation. We will use the same technique here also. Okay, so first is 3 root 5. So 3 root 5 is given. 3 upon root 5 is given. So 3 is the numerator, root 5 is the denominator. ठीक है, अभी आपको दिख रहा है रैशनलाइजेशन करना है हमको. रैशनल नंबर का मीनिंग क्या? p अपॉन q where q कैनॉट बी इक्वल टू 0. सो अभी हमको यहाँ पर रैशनलाइज करना है इसको. यहाँ पर रूट 5 दिया हुआ है. Okay, so now what we will do here, 3 upon root 5 is given. 3 is the numerator and root 5 is the denominator. Okay, so now we are using here p upon q where q cannot be equal to 0. Okay, because the rational number का meaning क्या? rational number are those number where numerator and denominator cannot be equal to 0. So 3 upon 5 is equal to 3 upon 5 multiply by root 5 upon root 5. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ तो आप डिनोमिनेटर को भी सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो 3 इंटू रूट 5 एंड 5 इंटू रूट 5. ओके, 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5. सो यहाँ पर आप देख सकते हो रूट 5 इंटू रूट 5 एक कॉमन रूट के अंदर आ गया. तो 5 5 से 25 हो गया और यहाँ पर कितना है न्यूमरेटर? 3 रूट 5 आ गया. You can see here 3 root 5 is the numerator and root 25 is the denominator. So 5 1s are 5, 5 5s are 25. Okay, so 3 root 5. Okay, and 5 is the 25 का रूट क्या है? 5 है. तो देखो डिनोमिनेटर रूट 25 से 5 हो गया है. सो 3 रूट 5 तो रहा ही, जैसा था हमने पहले कैलकुलेशन में लिए थे वैसा आया.
और 3√5 के नीचे हमने क्या लिए, डिनोमिनेटर 5 लिए, बिकॉज 25 का रूट क्या है, 5 है. ओके, सो आवर आंसर इज 3√5 अपॉन 5. ओके, सो हियर वी हैव अप्लाइड द rationalize the denominator technique. Is that clear, my dear students? Now here you can see the second question. 1 upon root 14. Now here root 14 is given. Now again same technique we will apply. root 14 जो है उसको हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब क्या करेंगे हम, 1 upon root 14 is equal to 1 upon root 14 multiply by root 14 upon root 14. Now here you can see the denominator are common. Okay, so 14 into 14 लेंगे हम, तो root 14 into root 14 and 1 into root 14. Okay, so now here 14 14 कितना आता है आपको पता है. सो 14 14 से आपको कैलकुलेट करना है और उसका आंसर आपको लिखना है, तो आपको मिलेगा 196 एंड 14 1 से कितना है, 14 है. ठीक है, क्योंकि लास्ट यहाँ पर 1 नंबर था तो आपको पता है कॉमन आपको मिलने वाला है, तो 14 1 से 14 नहीं भी लिखेंगे तो आप वहाँ पर 1 ही है. ना 14 अपॉन 14, ठीक है, 196 का रूट क्या है, 14 है. सो नाउ हियर वी हैव रिटर्न 14 बट वी हैव रिमूव द रेडियंट साइन. ठीक है, हमने रूट का जो साइन था वो रेडियन में से निकाल दिया है, तो अब आप देख सकते हैं वो रेडियन नहीं रहा, वो एक नंबर बन चुका है, तो 14 है. ठीक है, एज सेम लाइक 5. नाउ 14 अपॉन 14, रूट 14 अपॉन 14. नाउ सब क्वेश्चन 3, 6 upon 9 root 3. Here you can see this 6 upon 9 root 3. Now here 6 upon 9 root 3. तो 9 रूट 3 को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना है. 9 का फैक्टर क्या है, 3 है. ठीक है, 3 3 9 होता है और रूट 3 तो रूट 3 रहा. अभी 3 रूट 3 जो है ना उसको हमको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तो हम जो रेडियंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो रेडियन इज रूट 3, सो रूट 3 न्यूमरेटर, रूट 3 डिनोमिनेटर. सो 2 इंटू रूट 3, बिकॉज देखो न्यूमरेटर में कोई भी रेडियन वाला नंबर नहीं था, सो हमने जो डिनोमिनेटर का रेडियंट है वो न्यूमरेटर को दे दिया, 2 इंटू रूट 3. सो 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3, so 3 3 is 9 and 2 root 3. So now here you can see 2 root 3 and divide by 3 root 3. So 2 root 3 upon 3 into 3. Why? Because 9 का रूट क्या है, 3 है. So here 3 3 से कितना आया, 9. So simply हमने रेडियन की जो साइन है वो हटा दिए, रेडियन का नंबर चला जा चुका है, तो अब हमारे पास क्या बचा डिनोमिनेटर में, 9. So our answer is 2 root 3 divide by 9. Is that clear, my dear students? Now in this way we have finished practice set 2.3. My dear students, your task is to solve all this question. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in your Maths 1 notebook. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share my video.